हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन। आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 29 करने जा रहे हैं। ये हमारा एक मैक्रो लेसन प्लान है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीरेंड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा पीटीएस रोल नंबर 66, फिर आएगा सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक जीरेंड, क्लास 6, ड्यूरेशन 35 मिनट, डेट। अगर मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट और मेरे लेसन प्लान्स आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। जनरल ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1, to develop all 4 basic skills: listening, speaking, reading and writing. Number 2, to develop efficiency in English language. Third, to develop vocabulary and enhance pronunciation. Fourth, to develop insight of students into the rules of English grammar. इसके बाद आएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन जीरेंड। 2, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू recognize gerund in a sentence. Third, students will be able to create new sentence using gerund. इसके बाद आएंगे हमारे टीचिंग एड्स। A well occupied classroom containing chalk, duster, pointer, blackboard, chart related to the topic. अब हम करेंगे बच्चों की पीके टेस्टिंग, मीन्स प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करेंगे कि बच्चों को कितना मालूम है टॉपिक के रिलेटेड। Betty will introduce the topic by asking a few questions to the students. Question number 1, read in a sentences. They bonded over their shared love of hiking. 2, I hope to set a new record in swimming. Question number 3, what is the common in these two sentences? Question number next, what are such words known as English grammar? Announcement of the topic. Well students, today we will discuss gerund in detail. अब आएगी हमारी मेन प्रेजेंटेशन जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। सबसे पहले हम gerund होता क्या वो बताएंगे, इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। Gerund, a verb that is acting as a noun. We mean that the word that describe the action that's happening, like biking, thinking, running or speaking, becomes a thing or a concept, the subject, direct object, indirect object or the object of a preposition. PT's activity. PT will introduce the lesson and explain the gerund using chart. Pupils activity, students will be listen carefully. और जो हमारा बेबी वर्क है पेज नंबर 1 पे हमने इसका सिर्फ नेम लिखा हुआ है और नंबर 2 पे हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, इसका मीनिंग बताया। अ नाउन एंडिंग इन ing that has been made from a verb. Next one, it does not stop being a verb, but the role it plays in a sentence shifts from a describing action to being a focal point. PT's activity. PT will tell about the gerund in detail. Pupils activity, students will pay attention to the PT. और हमारा बेबी वर्क, a gerund in a role in a sentence shifts from describing the action to being a focal point. Next, gerunds are verbs in the present participle form like root verb plus ing. PT's activity. PT will tell the role of gerund. Pupils activity, student will try to understand. आगे आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। फजल ट्विन्ड ऑफ हिज फोन सो ही कुड फोकस ऑन स्टडिंग। PT's activity. PT will give examples of gerund. Pupils activity, students will note down the important points in their notebooks. PV work, एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जैसे ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, बाइकिंग, रनिंग, स्पीकिंग। अब हम करेंगे सेक्शन रिकैप्चुलेशन। Question number 1, identify gerund in the following sentence. Number 1, smiling is a free therapy. Number 2, when are you going hiking next? 3, cycling keeps you healthy. Question number 2, what is the rule to identify gerund? अब हम जो हमारी एक्टिविटी वो फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके हम टाइप्स बताएंगे। टाइप्स ऑफ gerund. फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट, बाइकिंग इज़ माई हॉबी. Number 2, subject complement, my preferred commuting method is biking. 3, direct object, I love biking. 4th, indirect object, my sister gave biking a try. Number 5, object complement, I see myself biking every day. PT's activity. PT will explain the types of gerund one by one with examples. Pupils activity, student will note down the types of gerund and example on their notebooks. और जो हमने टाइप्स किए थे उसके नेम्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब आएंगे हमारे जीरन फेस। फेसेस दैट कंटेन्स अ जीरन दैट अ मॉडिफायर और एन ऑब्जेक्ट और इन सम केसेस बोथ। एग्जाम्पल apologizing to them, apologizing, sorry. PT will explain gerund phrase using chart giving examples. Student will listen carefully. और जो यहाँ पर हमारे components of a gerund phrase यहाँ पर हमारा बेबी वर्क बना हुआ है, gerund, modifier and object. Final recapitulation: use the following into 6 different types of gerund in sentences: tracking, shining, smiling, roaming and eating. देन आएगा हमारा होमवर्क, प्रिपेयर अ चार्ट ऑन द टॉपिक जीरेंड। और यहीं पर जो आज का हमारा मैक्रो लेसन प्लान है ख़त्म होता है। इसके आगे इसकी पिक्चर्स ऐड कर दी गई, आप चाहो तो पोज करके इसको लिख सकते हो।